Hi everyone, very warm welcome to Look Gorgeous. In this video, I'm going to be reviewing and demoing the YBP into Shreya Jain color cream in the shade Goddess. I have already done lip swatches of other three colors, full face or first impressions review demo kind of thing already on my channel. I'll leave the links down there in the description. You can check that and also in the cards above. By the way, please give this video a big thumbs up. Also subscribe to my channel for more such videos. And let's just start it. And this is how the packaging looks like. Very beautiful cardboard packaging, then this beautiful tube through which color you can see. It's a travel friendly packaging. Price is 1200 rupees, a little costlier, but you get a cruelty free made in India product. Also this is paraben free, talc free, which is a great thing, and Shreya Jain name is there, and also YBP Cosmetics is a good decent brand. And packaging of the product is little messy, but overall there are pros more than the cons. So this is how it is gonna look like. So if you take a little more product, then you will get that blinding kind of effect, and there are no shimmer particles which you will be able to see. No मतलब no means no, not at all. आपको बिल्कुल भी shimmer particles नहीं मिलेंगे. And ignore the purplish kind of shade. That's all because of the mermaid shade. So बिल्कुल ज़रा सा अगर आप बिल्कुल छोटू सा डॉट लेते हो and उसको आप अच्छे से blend कर लेते हो, then you will get a subtle natural kind of glow. और अगर थोड़ा ज़्यादा लगाते हो तो इस तरह से ब्लाइंडिंग ग्लो मिलेगा. मैंने यहाँ पर लगाया है. आई एम गेटिंग काइंड ऑफ अ नेचुरल ग्लो बिल्कुल ज़रा सा लगाने पर. और मैंने नोज़ पे भी लगाया हुआ है और इस साइड का मैंने वाइप ऑफ कर दिया है. अब आई एम गोना टेक 3 drops, very small drops. Be very careful with the quantity of the product because ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड प्रोडक्ट है, तो just be careful. मैंने अपने चीक बोन पर जहाँ पे एक हड्डी फील होती है वहाँ पर ये 3 डॉट्स लगाए हैं. इसके बाद बस मैं यहाँ पर फिंगर से ही इसको हल्का हल्का करके ब्लेंड कर रही हूँ. ये अगर आपको ब्लाइंडिंग इफेक्ट चाहिए तो आपको इस तरह से 3 डॉट्स लगाने हैं. और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे. इधर से ब्लश के ऊपर आ गया तो इसको मैंने फिंगर से वाइप करके उतार दिया. इजीली उतर भी जाता है. एक बार सेट होने के बाद नहीं उतरता है इजीली, बट जब तक सेट नहीं है तब तक आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो. आई हैव ऑयली स्किन टाइप. ये बहुत ही क्रीमी है, तो ये ड्राई और नॉर्मल स्किन टाइप के लिए तो परफेक्ट है ही अनडाउटेडली, बट ऑयली स्किन पे भी ये टिक जाते हैं. दे स्टे ऑन ऑयली स्किन एज वेल and proper staying power and everything. I'll leave down in the description box below, so please make sure to check that out because I'm kind of testing the product every day. So अच्छे से आपको description box में मिल जाएगा पूरा staying power. I have yet to try it little more. Okay, तो आपको ये इस तरह से effect मिलेगा. My cheeks are glowing as you can see. और थोड़ा ब्लाइंडिंग इफेक्ट भी मिल रहा है विच इज़ टोटली परफेक्ट. और हल्का सा आप कम लगाते हैं देन यू विल गेट दिस नेचुरल ग्लो. थोड़ा सा ज़्यादा लगाते हो तो आपको ये ब्लाइंडिंग इफेक्ट मिल जाएगा. सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग. लेट्स ट्राई आउट ऑन द सेंटर ऑफ आईलिड्स. बिल्कुल ज़रा सा मैंने अपने फिंगर पे लिया है. सेंटर ऑफ आईलिड. मेरे आईलिड्स पर मरमेड शेड है एंड मेरे हाथ और हर जगह मरमेड शेड है फ़िलहाल. मेरे लिप्स पर मरमेड, प्रिंसेस और विच का मिक्सचर है. सो इस तरह से मैंने हल्का सा ये शेड गॉडेस लेकर हाइलाइटर वाला जो है इसको अपने आईलिड्स पर लगा लिया है. एंड थोड़ा सा ग्लॉसीनेस मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, बहुत कम लगाया था. लेट्स टेक अ लिटिल मोर. थोड़ा सा और ले लिया है और सेंटर में लगाया है. एंड अच्छे से अब थोड़ा ग्लॉसी लुक आ रहा है. सो इफ़ यू वांट ग्लॉसी आई शेडो लुक देन आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो.
Expiry of the product is for 2 years. You're getting 14 grams of product, which is quite a lot of product. और इस तरह से I have applied it on my eyelids and my eyeshadow is looking beautiful and glossy. You can also apply a little bit on your lips. To get a little pouty like effect, you can just apply a little bit of shimmer. It is not shimmery, little bit of highlighter on the center of your lips so that your lips look fuller and bigger. You can apply it all over on your lips as well for that metallic lips look, but that's really hard to carry. So overall, you can totally apply your highlighter as natural, glowing, blinding, and also on your eyeshadow for your glossier eyelid look. Am I gonna use it? Definitely I'm gonna use it because I've paid for it and it's a really nice product as well. Do I recommend? If you can spend 1200 rupees, then I surely recommend because ये बहुत अच्छा एक बिना shimmer वाला natural glow देने वाला product है. Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Till then, take care, look gorgeous. I would rather like to apply a little powder baked highlighter over the product, or just normally using the brush like this so that it's blended nicely into the skin and the staying power gets increased.